Hi guys, welcome back to Learn with Lodhas, and in this tutorial we'll learn when income is taxable under house property head. This section 22 of income tax prescribe some conditions which provide you that when this particular income is taxable under house property head. So as we all are aware that there are 5 heads of income, say salary head, house property head, business of profession, capital gain and other sources. So if any income is there, so how will you be able to understand that particular income is taxable as a house property head or not? So this is basically 3 conditions you need to check. So first condition is there must be a property, and that property should consist of a building or land attached thereto. So first condition is obvious, very obvious, since it is house property. So there should be a house property or there should be a property, and that property must have or should have a building. Okay, if it is not the building, only land, then this head cannot apply to that particular land. So there must be a land, there must be a building, or there may be a land attached to a building. Okay, when a land is attached to the building, then this house property head can apply on that. But it is only when it is only the land, then it cannot apply on the income from that land cannot be taxed under house property head. Hope this condition 1 is clear. For my Hindi lovely audience, I will repeat this condition in Hindi also. एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल करना है किसी को, तो एक प्रॉपर्टी होना चाहिए. ठीक है, पहली कंडीशन. हाउस प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या होना चाहिए, एक बिल्डिंग होना चाहिए या उस बिल्डिंग के साथ में एक जुड़ा हुआ लैंड होना चाहिए. ठीक है, जैसे आप अपने घर में देखते हैं कि एक प्लॉट ऑफ लैंड है, आप उसके कुछ पोर्शन पे घर बनाते हैं, बाकी प्लॉट खाली रहता है जहाँ पे आप गार्डनिंग और पार्किंग और ये सब करते हैं. तो वो जो पार्किंग गार्डनिंग की जब लैंड है वो आपकी बिल्डिंग से जुड़ी है, इसलिए अगर उसका भी कुछ रेंट है या उसकी भी कोई इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड उस पर अप्लाई कर सकते हो. लेकिन आप ये सोचिए आपके पास में कोई लैंड है, प्लॉट है, और उस प्लॉट को आपने रेंट पे दे दिया. ठीक है, तो उस प्लॉट के रेंट पे आपको जो इनकम होगी, अगर उस प्लॉट के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है तो वो रेंट की इनकम आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड पे टैक्सेबल नहीं होगी. ये आपको आइदर आपको अदर सोर्सेज या बिजनेस हेड, वो एक अलग है कब वो बिजनेस हेड में होगी कब अदर सोर्सेज में होगी, बट उस पे हाउस प्रॉपर्टी हेड आप अप्लाई नहीं कर सकते. सो होप दिस कंडीशन 1 इज क्लियर टू all of you. And now moving ahead to condition 2, assessee should be owner of that property. Okay, so you should be owner if you wish to apply house property head on any property, then that person should be owner of that property. assessee को उस प्रॉपर्टी का ओनर होना पड़ेगा. अगर आप सेक्शन 22 जो है उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्स लेना चाह रहे हैं, तो लेट्स से मेरा एक फ्लैट है मुंबई में और मैंने उस फ्लैट को किसी को रेंट पे दिया है, तो मैं उस फ्लैट का ओनर हूँ और उस रेंट से जो इनकम होगी वो मेरे को टैक्सेबल होगी, मुझ पर टैक्सेबल होगी. और उसी तरह से सिमिलरली मेरे पास में कोई फ्लैट नहीं है, मैंने एक फ्लैट रेंट पे लिया, 3 BHK फ्लैट रेंट पे लिया, बट मेरे को 2 BHK फ्लैट इनफ है. एक जो रूम है वो मैंने मेरे एक फ्रेंड को आगे सबलेट कर दिया. तो उस फ्रेंड से जो मेरे को रेंटल इनकम हो रही है, will it be taxable under house property head? No, not at all, because I am not the owner of that flat. I myself have taken that flat on rent from somebody else. Then I am not the owner. Then how can I satisfy this condition 2? So since I am not satisfying condition 2, therefore this income will be taxed under other sources. Okay, house property head cannot apply on this particular income. So third condition, moving ahead to third condition, which is property should not be used for assessee's own business or profession of which profit is chargeable under income tax head. So this condition saying that property which we are talking about in condition 1 and 2 is not used by the assessee for his own business or profession. Let's say I have
one flat which I am using for my profession as a chartered accountancy profession, then any income or any income arising out of that property is not taxable under the house property head. For that, business head applies. Okay, so we won't discuss that property at all in this house property head because it is not falling under the charging section itself. Once any income cannot fall under the charging section of any head or any section, then you can't impose tax on that income in particular head. So if I am using my property for my own business or profession, then even the last line is more important. People generally get confused that profit of which are chargeable to tax. So somebody will say, I have loss in my profession, then can I take the advantage of this condition? Obviously, yes. The intention of the lawmaker is not that there should be only the profit. If you are doing the business or profession, there may be some year there may be some losses, there may be some profits. So even if you are facing a loss in your profession and you are using your property for your business or profession, then you can escape your liability under house property head. Okay. For अगर आपका प्रॉपर्टी, ठीक है, आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं तो आप पर हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा, चाहे उस बिजनेस या प्रोफेशन से आपको प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको केवल उस बिजनेस से प्रॉफिट होगा तभी आप इस कंडीशन का फायदा ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपका कोई बिजनेस है और आप अपने घर को उस घर में ही अपना बिजनेस चला रहे हैं या अपने घर को उस बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपके उस घर का जो भी इनकम है, उस घर से जो भी इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। तो hopefully this all three conditions are clear to all of my viewers, whether maybe Hindi audience or English audience. I have tried to speak both in Hindi and English, and in future also we will try to speak in both the languages so that the language should not become the barrier between the knowledge or the education. So hopefully this tutorial will make sense for all of you who wish to know about when the income is taxable under the house property head. So thank you very much for watching, and if you like this tutorial, then just come on and subscribe us. It takes only few seconds for you, but it matters us to a lot. So if you have any queries relating to anything regarding income tax, accounts, finance, banking, any kind of any query, academic, non-academic, professional queries, you can just post me on my Facebook page, that is www.facebook.com/learnwithlodas. And if you have any queries relating to TDS or e-TDS return filing, then you can just go ahead and just post me on www.facebook.com/filing TDS return online. So until then, me Sumit signing off. Thank you very much.